Hello everyone. Today we are going to discuss about De Moivre's theorem. So let's start. A statement of De Moivre's theorem is if n be an integer, positive or negative, the value of cos theta plus iota sin theta to the power n is cos n theta plus iota sin n theta, and if n be a fraction positive or negative, then one of the values of cos plus iota sin to the power n is cos n theta plus iota sin n theta. Proof. Case first. When n is a positive integer, then cos theta 1 plus iota sin theta 1 into cos theta 2 plus iota sin theta 2. Now first multiply cos theta 1 by cos theta 2 plus I sin theta 2. Then cos theta 1 into cos theta 2 plus cos theta 1 into iota sin theta 2 plus iota sin theta 1 into cos theta 2 plus iota square sin theta 1 into cos theta sin theta 2. Now cos theta 1 into cos theta 2 माइनस दिस इज द आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा -1, दिस इज द -1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 and I is common, here iota is common, I into cos theta 1 into sin theta 2 and sin theta 1 into cos theta 2. Next, this is the cos a plus b, this is the we know that, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, cos a plus b इक्वल टू होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. So here
cos theta 1 minus plus cos theta 2. This is the cos theta 1 and cos theta into cos theta 2 minus sin theta 1 and sin theta 2. This is the cos theta 1 plus theta 2. Cos theta 1 plus theta 2. And this is the sin A plus B, that is I into sin theta 1 plus theta 2. This is the first case. Similarly, इसी प्रकार से हम आगे लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? cos theta 1 plus iota sin theta 1 into cos theta 2 plus I sin theta 2 into cos theta 3 plus iota sin theta 3. This is the result of that we already here solve, that is cos theta 1 plus cos theta 2 cos theta 1 plus theta 2 and I sin theta 1 plus theta 2. Next, cos theta 3 plus I sin theta 3 now solving. This is cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 and I sin theta 1 plus theta 2 plus theta 3. This is the multiply both cos theta 1 plus 2 and plus iota sin theta 1 plus theta 2 into cos theta 3 plus I sin theta 3. That is if follow this process, we have find n times. Now cos theta 1 plus iota sin theta 1 and cos theta 2 plus I sin theta 2 and dot cos theta n plus I sin theta n. The result will be cos theta 1 plus cos theta 2 plus dot cos theta n and I sin theta iota theta 1 plus theta 2 plus dot plus theta n. This is the first case, and putting here theta 1
theta 1 is equal to theta 2 plus dot dot theta n in the sense of here put here putting theta 1 is equal to theta 2 dot dot is equal to theta n, then this equation will be find cos theta plus iota sin theta to the power n is equal to cos theta cos n theta. This is the cos n theta plus iota sin n theta. This is the first case. Next, second case is here. If n is negative integer, this is the second case. Case second, when n is negative integer. जब n का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे तो क्या करेंगे, लेट n इज इक्वल टू माइनस m, n इज इक्वल टू माइनस m वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर. अगर m अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा n का वैल्यू. सो हेयर m इज पॉजिटिव एनी नंबर्स, then cos theta iota sin theta to the power n is equal to cos theta plus iota sin theta to the power minus m. Now 1 upon cos theta plus I sin theta to the power m. By the case first, here case first से 1 upon cos m theta plus iota sin m theta. This is the by case first. case first में हम लोग यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा निकाले हैं. सो मल्टीप्लाइंग हेयर कंजुगेट, जब इस फॉर्म में रहता है तो हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेयर here 1 upon cos m theta plus I
sin m theta into cos m theta minus iota sin m theta upon cos m theta minus I sin m theta. This equal to cos m theta minus I sin m theta upon this is the a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So cos a square m theta minus this is the I square sin a square m theta, and this is the minus वन. आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 and I to the power iota to the power 4 is equal to 1. So we already know in complex number. So this is the 1, this is the 1, because this is the cos m theta minus I sin m theta upon cos square m theta प्लस दिस इज द माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस. सो साइन स्क्वायर एम थीटा, एंड वी नो दैट इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट हेयर द एंगल इज एम थीटा, हेयर एंगल इज एम थीटा. सो this is the one, and finally second case. So this is the cos m theta and minus sin m theta. Now this is the cos minus m theta and plus iota sin m theta. So now cos n theta plus sin iota sin n theta. This is the second case. And third case, when n is फ्रैक्शन, जो n होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा. और क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव. सो लेट n is equal to p upon q. This is the fraction, and in its lowest terms, here p is
and integers either positive or negative, positive or negative, and q is positive and q is positive integer. So here put, देन क्या हो जाएगा, इन के जगह पर पुट करना है क्या, cos p इंटू थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन p इंटू थीटा अपॉन क्यू टू द पावर n, सॉरी n की जगह पर क्या रखना है, q. So here this is the n cos into pq. So q into p theta upon q plus iota sin q into p theta upon q. Now p here q कैंसिल हो जाएगा, सो cos थीटा सॉरी cos p थीटा I sin p theta. This is the third result by case 1. Now taking qth root of the both side, therefore qth roots of both side. So we find cos p theta upon q iota sin pq upon p theta upon q is one of the roots of cos p theta of I sin p theta. But cos p theta iota sin p theta is equal to cos theta iota sin theta to the power p by case 1 and 2, by case 1 and 2. So hence here
hence cos p upon q theta plus I sin p upon q theta is one of the roots of cos theta I sin theta upon p upon p cos theta I sin theta to the power p. This implies cos p upon q theta plus I sin p upon q theta is the both roots of is the value of cos plus I sin theta to the power p upon q. Therefore cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I n theta. This is the proof. So thank you for watching. Thank you.